बेहद खास शख्स हैं अदिति गर्ग, जैसे अनन्या ने आपका परिचय करवाया। ये आईएएस ऑफिसर हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मिशन डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश राज्य के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा आपका कि आप आए यहाँ भोपाल से। और मैं अब सीधा आपसे पहले तो सवाल पूछना चाहूँगा इस योजना के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं कि तमाम योजनाएं जो हैं वो भारत सरकार लाई है, बहुत लोगों को लाभ तो ज़रूर मिला है, मगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बाकी योजनाओं से कैसे अलग है मैम, और इसमें क्या खास है कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन ये योजना कर पाई है इतने कम समय में? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और एक मंच दिया जिससे इस स्कीम की, इस योजना के बारे में मैं कुछ मुख्य पहलू आपके समक्ष रखूं। देखिए, आपका सवाल जो है वो अन्य योजनाओं से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कैसे विभिन्न है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी कई योजनाएं और भी अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में चल रही हैं, प्रचलन में हैं। PMJAY, जिसे ज़्यादातर लोग आयुष्मान भारत कहते हैं, ये 5 लाख तक का कवर प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जाता है, और इसमें करीब 2000 ट्रीटमेंट्स मध्य प्रदेश में दिए जाते हैं। इस स्कीम का स्कोप मैं पहले थोड़ा समझाना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश में पर डे 4000 ट्रीटमेंट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं इस स्कीम में। ऑन अ डेली बेसिस देयर इज़ अ बजट एलोकेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4 crores पर डे। तो इससे बड़ी कोई अन्य योजना और हो नहीं सकती, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए मैं आपको बता दूं कि करीब 80% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन इज़ कवर्ड। ऐसी कोई और योजना मैंने आज तक नहीं देखी है जिसमें इतने ज़्यादा लोग एक बार में एक स्कीम में कवर किए जाएं। देखिए, ये योजना अन्य योजनाओं से इसलिए अलग है क्योंकि ये योजना हर उस व्यक्ति के लिए है जिसे इलाज की आवश्यकता उसको या उसके परिवार को जीवन में कभी ना कभी लगती ही है, और उसे ये कवर करता है। एक परिवार के जितने भी सदस्य हों उनको प्रति वर्ष 5 लाख तक का कवर देना, ये एक काफ़ी अहम योजना है। और इससे जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, आपको जानकारी है कि यदि किसी भी परिवार में कोई व्यक्ति गंभीर बीमार पड़ जाए और उसका जो खर्च उस परिवार को उठाना पड़ता है, उससे वो पूरे परिवार गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। तो ये एक ऐसी योजना है जिससे हम कोई किसी को मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देते, या हम उसे कोई एक स्किल ट्रांसफ़र नहीं करते, हम उसे कोई काम करने के लिए सक्षम नहीं बनाते, परंतु हम उसे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड सपोर्ट देते हैं जिससे वो आगे चल के अपने जीवन को सही रूप से जी सके, और जो उसे काम करना हो वो कर सके, उसे जो चीज़ें हासिल करनी हो वो कर सके। तो ये योजना एक तरीके से एक स्टेट स्पॉन्सर्ड सपोर्ट स्कीम है जो कि किसी भी तबके के वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही अहम है। मध्य प्रदेश अक्सर भारत का दिल कहा जाता है, और ये विशाल राज्य है। इस राज्य में पॉपुलेशन की संख्या भी बहुत है। सो हाउ चैलेंजिंग वाज इट फॉर यू टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम इन a state the size of Madhya Pradesh? Because if we talk about the population and the size of the state, it's equivalent to many countries abroad, ma'am. तो वो कितना बड़ी चुनौती थी आपके लिए, and how did you all go about implementing this scheme in MP? Tell us a bit about that. So very rightly you have put that across, that Madhya Pradesh implementing Ayushman Bharat is almost like a scheme being implemented in any of the European countries, or maybe say Canada. It is approximately the same scale. The population of Madhya Pradesh is approximately 7.5 crores. Ayushman covers 4.5 crore people. So almost 70 to 80% of the state population is already covered under this scheme. The important thing that we have done in the state is that we have ensured that access to the scheme is 100%. So
already almost 80 to 90% of the state is covered in terms of having an Ayushman card. You know, a card is not of much significance, but if you give it to a family that is not aware of the scheme, and you tell them that, look, this is your card, and on this card you can avail treatment up to 5 lakh, that means a lot to them. So it's very important to for the state to expand the scheme, and that is why we have ensured that 80 to 90% of eligible beneficiaries are covered in terms of having a card and a registered and their registration done under Ayushman. We have also ensured in Madhya Pradesh that 100% of the families have at least one member who has a card. In your family, if you know that one of the family members has a card, you know that at least everybody else can avail of the benefit. Yes. So we have, on a war footing, gone ahead and ensured that access is available. The second thing that we have done is that we have tried to ensure equitable access in terms of availability of hospitals. So Madhya Pradesh has, on a very wide scale, empaneled a large number of hospitals, whether it is public or private. We are trying to ensure that quality standardized care is also provided through our public institutions. For example, the medical colleges, the district hospitals, the community health centers, and down below. So there is a lot of awareness in Madhya Pradesh, and what I'm very happy with is that a lot of our public representatives, our spokespersons for the government, are constantly raising awareness for the scheme. I have rarely been to a public event where the scheme is not extolled, the virtues and the benefits of this scheme are not enumerated. So it goes a very long way in helping us implement the scheme at the grassroots level. और मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि आगे का रास्ता अब क्या है? बहुत कुछ काम हो चुका है और आगे ये योजना का फ्यूचर का भविष्य क्या है? और मध्य प्रदेश जो है, जैसे आप कह रहे हैं, बहुत सफलता आपको एमपी में मिली है, वो मॉडल अन्य राज्यों में कैसे अपनाया जा सकता है? So there are a lot of learnings from the state of Madhya Pradesh that can be taken up by other states who are willing to expand in Ayushman Bharat. One of them, of course, is that we have widened the beneficiary net base. We have ensured entrenched access to the scheme, sufficient publicity and awareness, and IEC activities have been done. But most importantly, I feel the government has, on a war footing, gone ahead with ensuring that hospitals that are providing treatments under Ayushman are also fully accommodated to the extent that they can be accommodated under the scheme. So I think those are massive learnings. What the road lies ahead for Madhya Pradesh in terms of the future of Ayushman Bharat, I would say we have to move towards digitization of Ayushman Bharat. The state of Madhya Pradesh is implementing the Ayushman Bharat digital mission, under which we will soon have digitally linked records of beneficiaries and easy access to those digital records. As you would know, whenever we go to take treatment, we usually have to carry huge documents, X-ray sheets, prescriptions. Whenever we go to meet a doctor, हम लोग हमेशा वो अपना पुराना prescriptions और वो सारे reports लेके चलते हैं. The idea is that Ayushman Bharat should be a digital enabler. It should also provide for equitable access through the digital platform, so that a person who is going from, say, Madhya Pradesh to any other state, whether it is Delhi or Bombay or any other state, can make use of the benefit of portability of the scheme. Okay. Suppose I am an Ayushman beneficiary, Ayushman Bharat allows me to take the treatment in any state across the country. So it should be easy for me to take that treatment. I think that is the portability and the technology adaptation is where Madhya Pradesh is going to focus on coming forward. Okay. And at the same time, we have our yet to be reached areas, the very
deprived sections and the very distant, unconnected parts of the state जी. that we are hoping will come forward and be connected through the scheme. So, as you said, we are the heart of the country, but we believe in preserving and keeping the heart very healthy. So, we want it well connected. Thank you. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति गर्ग जी कि आज आप यहाँ हमारे हेल्थ कॉन्क्लेव और सुश्रुत अवार्ड्स पे आज आएँ और मैं आपको बधाई देता हूँ कि कितना काम हो गया है इस स्कीम के तहत मध्य प्रदेश में, और शुभकामनाएं, क्योंकि जैसे आप कह रही हैं कि आगे का रास्ता भी कठिन है, मगर आप इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.